and the others, they are supposed to ask questions. If you do not have any questions, then it will show that you were not paying attention to this. I want the presenters to be grilled as much as they can about the topic that they are presenting. छोटी से छोटी चीज cover हो जानी चाहिए इस एक presentation में. And I am expecting everyone to ask at the very least one question. Erratic means something that is very random, which does not have a definite path. So I hope you are understanding. So everybody will pay very close attention to what is being said here because you are supposed to ask questions. जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो, बट दिस इज पीयर टीचिंग. यू विल आस्क ईच अदर क्वेश्चंस कि ये क्या था, ये कैसे था, एंड द क्वेश्चन शुड बी इंट्रीगिंग. कंप्लीट नॉनसेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग होना चाहिए. एंड एवरीबडी विल आस्क अ क्वेश्चन. And I will not ask कि तुम पूछो या तुम पूछो. You will do it on your own. I am just an observer in this class. I will try to speak as less as I can. This is you teaching to your peers. Peer teaching का मतलब यही होता है कि आप आपके peers को पढ़ा रहे हैं. So whatever questions they have, they will ask. Questions नहीं पूछने के marks तो नहीं दूंगी मैं, ये तो पक्की बात है. If your question is very good, if your question is intriguing, अगर आपके question की quality बहुत अच्छी है, you will come in my good books, and if you are in my good books, I will always compensate your marks here and there. मेरा pattern समझो तुम internal marking का. It is not just like कि इसकी boundary सही नहीं है, ये चार्ट अच्छा नहीं है, तो इसको इतने marks मिलेंगे. If you are performing well in the overall performances, if you are if you are being interested in the class, you come in my good books. If you are in my good books, I will compensate your marks. मैं कम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इधर उधर मार्क्स तुम्हारे बढ़ा दूंगी if I feel like you are performing well. So okay, I am ready for the presentation. I'm muting myself, and hopefully I won't need to unmute myself during this whole presentation. Over to you, Group Simon. एक बार अपने सारे मेंबर्स के नाम मुझे इस चैट बॉक्स में लिख के बता दो before you start your presentation, and then you may begin. बेटा आपसे नहीं बोला है, सिमोन के ग्रुप का प्रेजेंटेशन है, उसके ग्रुप के मेंबर्स के मुझे नाम चाहिए बिफोर दे बिगिन, एंड देन आई हैव गिवन देम ऑलरेडी परमिशन टू बिगिन. शुरू करो प्रेजेंटेशन अपना. ओके, आई हैव नोटेड दिस डाउन. स्टार्ट. Ma'am, is the screen visible? Yes, it is visible. So, Om Shri Sai Ram. Today, our group is going to present the chapter number 2 of economics, that is sectors of Indian economy. So, the topics we have covered in this chapter are sectors of economic activities, comparison of the three sectors, division of sectors as organized and unorganized sector, division of sectors in terms of ownership, that is private sector and public sector, and at last, we have conduct a quiz. So, now let's begin. So basically, Indian economy have three major sectors, that is primary sector, secondary sector, and tertiary sector. As we have already read this chapter, so now is the time to revise. So let's revise this chapter again. So let's start with the primary sector. All those economic activities that are undertaken by directly using natural resources are included in primary sector. Primary sector is the base of all the other two sectors, that is secondary and tertiary, as most of the products we obtain from by fishing, agriculture or dairy. If primary sector will not be there, then I don't think that there will be the existence of secondary as well as tertiary sector.
So the examples include mining, forestry, fishing, poultry, etc. Now, secondary sector. What does it mean? It covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we generally associate it with industrial activities. For example, after obtaining a crop, say cotton, we need machines to change it into yarn and cloth. Similarly, from the crop of sugarcane, we are able to obtain sugar or gold. Now, tertiary sector. These are the activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce any good, but they are an aid or a support for the production process. For example, any good produced in primary or secondary sector need to be transported to the market. That will be done by tertiary sector. This is also known as service sector because it provides services to the people like in transport, which includes the examples such as transportation, uh, barbers, lawyers. Basically, lawyers, teachers are not helping in the production of goods directly, but they indirectly are playing the role of help in the economy of the country. So now I would request Simon to carry this presentation further. Can I ask you a question? Yes, sure. Is tertiary activities dependent on primary activities? Yes, tertiary activities are dependent on primary activities. As I have already said that without without this primary sector, there will be no role of tertiary as secondary. As if we will not obtain the products from dairy or fishing, then no manufacturing will take place, and as a result, we will not able to transport or provide services to other people. Well, then I just wanted to ask that teaching is also a tertiary activity. Then in teaching, what is the natural material or what is the what is the I am मतलब कौन सी चीज है प्राइमरी एक्टिविटीज की इसमें टर्शरी एक्टिविटीज में जो टीचिंग करते हैं उसमें टीचिंग एक डिफरेंट केस होता है जैसे मैंने मतलब एज आई हैव सेड अर्लियर कि जो टीचिंग और लॉयर्स वगैरह हैं ये इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर ये आपको टीचर्स अगर आपको पढ़ाएंगे नहीं या फिर लॉयर्स नहीं रहेंगे तो लॉ नहीं रहेगा तो इस वजह से क्या होगा हमारी कंट्री पे अलग ऐसे इफेक्ट पड़ेगा हमारे पास गुड्स और प्रोडक्ट्स होंगे लेकिन वो जो एक रहता है आपका इंटेलिजेंस नॉलेज वो सब नहीं रहेगा तो फिर उसका कुछ मतलब ही नहीं रहेगा Yes, carry on. Ma'am, is the screen visible? Yes, beta. Continue. Comparing the three sector of Indian economy. The three sector of Indian economy are primary, secondary, and tertiary. Primary sector. It is basically a sector of Indian economy which deals with the extension of the raw materials. Example: agriculture, fishing, forestry. Secondary sector. This sector of Indian economy deals with the manufacturing of the raw materials into more usable form. It composed of all the industries. Tertiary sector. This sector of Indian economy provides services to the primary and the secondary sector of the economy. Example: teacher, transport, hospital, etc. Primary versus secondary versus tertiary. Comparison. Basis: primary sector, secondary sector, and tertiary. Known as it. Primary sector is also known as agriculture sector.
Secondary sector is also known as manufacturing sector. Tertiary sector is also known as service sector. Provides it. Primary sector provides raw material to the nature. Secondary sector transport raw material into usable forms. Or tertiary sector provide useful services to the primary and secondary sector. Organized and unorganized. Primary sector are unorganized as they use traditional techniques. Secondary sector are organized and use better method of production. Tertiary sector are organized and use modern days technology. Example forestry, agriculture, fishing. Example manufacturing units. Example banking, hospital, teaching, etc. Yes, yes. Feel free to ask whatever you feel like. I also have some questions, but I'll give you the chance first. इसमें लगता है कि सेकंड टर्सरी की सारी चीजें बेटा तुम्हारी बेटा तुम्हारी है आवाज बहुत तो कट रही है. If you can just rejoin the meeting, I'll be able to hear you more clearly. थोड़ा सा hold your horses. मैम एक Let सेकंड yes. एक मिनट सौरभ कार्तिकेय प्लीज जस्ट मैम राइट योर आवाज ठीक क्वेश्चन. आ रही है आवाज ठीक आ रही है. आई एम सेइंग कि एक बार जरा अपने जो क्वेश्चंस हैं जो क्वेरीज है सभी लोग लिख के रख लो. लेट देम फिनिश क्योंकि उनके पास अलग अलग जो है डायनामिक्स है. अलग अलग उन लोगों ने पीपीटीज प्रिपेयर करे हैं. जब पूरा हो जाएगा एंड still if you do not get the answer then we will ask questions. Good enough everyone? Just write it down somewhere whatever queries you are. Yes, next. I'll give you a chance to clear it all. Just let everybody else finish. Sairam, my topic is division of sectors as organized and unorganized. Organized sector covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore have fixed work. Benefits of organized sectors: they work only for fixed hours. If they work more, then they have to be paid overtime by the employer. They have job security. They get paid leaves, payment during holidays, provident fund, etc. When they retire, these workers get pensions as well. Examples of organized sectors are teachers, policemen, lawyers, etc. Unorganized sectors. The unorganized sector is characterized by the small and scattered unit which are largely the outside the control of government. This means that unorganized sector has no signed document and no security for the job. Disadvantages of unorganized sectors. Jobs are low paid and are not regular. There is no provision of overtime. There are rules and regulations but are not followed. Employment is not secure. People can be asked to leave without any reason. And how to protect workers in the organized sector? Government can fix the minimum wages and working hours. Government can enact new laws on overtime and salary range. Government can provide cheap loans with low interest, can open small scale industries. Thank you. Okay, next. Ma'am, is the screen visible? Just give me 1 second. Yes, your screen is visible. The next topic is sectors in terms of ownership, public and private sectors. The way to classify economic sector is on the basis of who owns it
who owns it, who is the owner of the asset, and who is responsible for the delivery of services. On the basis of ownership, sectors are classified as private sector and public sector. Private sector is one in which ownership of asset or substance and delivery of service is in the hands of individual and company. Whereas in public sector, ownership of substance or asset and delivery of substance is in the hands of government. Now let us look into the difference between public sector and private sector. In public sector, their main motive is not just to earn profit, whereas in private sector, the main motive is to earn profit. In public sector, it provides services to all the sectors, whereas in private sector, it is limited to only few sectors. Now, in public sector, they raise money for various activities through taxes, whereas in private sector, they collect money for the services they provide. Now, some example of public sectors are railways, post office, and examples of private sectors are Tata Iron and Steel Company and Reliance Industries Limited. We can see the difference between public sector and private sector in with the example of public sector banks and private sector banks. In public sector banks, it is owned by government and their main motive is not just to earn profit. Their main aim is to provide a service. Whereas in private sectors, they are owned by individuals or companies and their main motive is to earn profit. Now, there are some activities which the government has to support. There is a relationship between farmer, government, and consumer. The government in India buys wheat and rice from farmer at a fair price. This it stores in its godown and sells it at a lower price to consumer through ration shops. In this way, government supports both farmer and consumer. Also, we can see that in public sector, both uh, both both primary sector, which is farmer, and tertiary sector, which is ration shops, are supported. Let's summarize what we have learned till now. In this chapter, we have looked at the ways of classifying economic activities into meaningful groups. One way of doing this is to examine whether the activity relates to primary, secondary, or tertiary sector. Another classification is to consider whether people are working in organized sector or unorganized sector. We also looked at the difference between private and public activities. We studied the data of India for last 30 years shows that while goods and services produced in tertiary sector contribute the most of GDP, employment remains in only primary sector. We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities. We also studied that most of people are working in unorganized sector till now. Chapter ends. Okay. मैम ये ग्राफ वाला कौन सा पढ़ा हमने? बेटे ये ग्राफ वाला वही था कि जो सेक्टर्स की जो वो है क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है टू द जीडीपी, उसके बारे में ग्राफ्स थे। मैम ये जो गवर्नमेंट होती है ये पहले मैम ये जो फार्मर्स होते हैं इनसे पहले सस्ते में खरीदते हैं, मतलब फेयर प्राइस में। तो एमएसपी पे खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। वो ये चाहते हैं कि फार्मर्स को कम से कम एक प्राइस तो मिले ही मिले। You have prepared some questions and I would like to
Ask Saurabh and Kartikeya to hold off for a minute. Chance for everybody else. If you want to ask something, now is your turn. मैम एक बार, एक minute, Kartikeya, एक minute. Let me just finish whatever I'm saying, then I'll come back to you. Whatever, if you have to ask question, write Q in the chat box, and if you do not have to ask question, just consider yourself losing marks. Kartikeya and Saurabh, I'll give you a chance in the end, so that others also get some chance to ask questions. Yes, Kartikeya, बोलो क्या बोल रहे हो? मैम तो फिर मैम मैम मतलब गवर्नमेंट ने अगर खरीद लिया उनसे एमएसपी में वो जो उनके वो सब्जी वगैरह खरीद लिया, तो मैम वो जब वो जो बाकी लोग को बेचेंगे तो वो मैम उनको मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस में बेचेंगे कि कम में बेचेंगे मैम मतलब तो See, गवर्नमेंट जो है वो अपने उसमें डालती है ना, फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई के बफर स्टॉक में खरीद के डालती है। गवर्नमेंट खरीद के किसी और को नहीं बेचती है जनरली, नहीं तो ये राशन शॉप्स के थ्रू जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बफर स्टॉक बनाया जाता है। इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट। यस इशिका। Which sector should be considered the most important one and why? Yes, group. Whoever is ready to answer may answer. कार्तिकेय रुक जाओ, पहले जिन लोगों ने बनाया है उनसे पूछते हैं, अगर वो नहीं दे पाएंगे देन विल कम बैक टू आउटसाइड पीपल। यस सिमोन, साक्षी, सची, तान्या। Ma'am, tertiary sector. Tanya, it would be better if you can explain it in audio, will be able to explain. Yes, Simon, tertiary sector, justify your answer. Because tertiary sector support both primary and secondary sector. Well, the rest is correct, but I'll need a more elaborate answer क्योंकि इसकी कम से कम 3 marks में तो आए, 5 marks 3 mark का question है ये। Ma'am, Yes, in Tanya. ancient times, primary sector is considered most important because at that time people do not have that knowledge, but they have that पर लेकिन उनके पास वो पावर रहती थी कि वो क्रॉप्स वगैरह उगाएं और उससे ये सब बेचे, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जैसे टीचर्स लॉयर्स हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आज के टाइम पे टर्शियरी सेक्टर इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज ये पीपल मतलब ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। उन जैसे टीचर्स हैं तो वो बच्चों को सिखाते हैं, तो उनसे क्या उनकी जनरेशन को भी फिर वो नॉलेज मिलती है और इससे जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो सर्विसेज की वजह से फिर और बढ़ती जाएगी। Well, the answer is not absolutely wrong, but I would have preferred it to be in English so that we can all write it. Yes, Kartikeya, want to add something to this? Want to structure the answer? मैम मैं तो ये कहना चाहता था मैम कि अगर हम लोग मैम मतलब कि वो जो मैम हमारी जो पूरी जनता है, जो पॉपुलेशन है, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो केवल खेती बाड़ी करके कमा रहे हैं। अब मैम अगर हम लोग ऐसे देखें कि हमारी जो पूरी जनता है उनमें से आधे से ज्यादा परसेंट लोग केवल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तक जो मैम प्राइमरी सेक्टर है उसको मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कहना चाहिए। लेकिन मैम आजकल के जमाने में हो क्या रहा है, जो टर्शियरी सेक्टर है ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। इसके कारण जो मैं मतलब प्राइमरी वाले लोग थोड़े कम होने लगे हैं और वो थोड़े मतलब अर्बनाइज हो रहा है, वो भी मतलब इन सब कामों में ज्यादा आने लगे हैं। तो मैम आजकल के मतलब मैम इसको पता नहीं इसमें वैसे मतलब दोनों में से पता नहीं कौन से इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मैम एक चीज पक्का है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सबसे कम इम्पोर्टेंट है, तो पक्का है। अच्छा, I would like to add something to the whole discussion. यहाँ पर हमें जब अपना आंसर जस्टिफाई करना है, we will put up the point about the contribution to GDP.
Contribution to GDP is the most when it comes to tertiary sector, and hence we can justify that. Yes, Ishika, you want to say something? मैम ऐसे तो हमें तीनों सेक्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, बिकॉज अगर हम फॉर अ टाइम किसी भी एक सेक्टर को इग्नोर करें या फिर जैसे प्राइमरी सेक्टर को हटा दें या फिर सेकेंडरी सेक्टर को हटा दें तो हम तो मतलब सब इधर उधर हो जाएगा। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि तीनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर तो हम ऐसे तो तीनों को इक्वली इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। Yes, you are absolutely correct. Everything has its own meaning, everything has its own significance. But what I said again, when we are trying to justify something, then we will go into fact. हम fact किस पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं GDP के contribution में कि over the time the contribution of in the GDP of the country has been most in the tertiary sector, and that is why we can say that एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो कंट्री की इनकम में सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस शुभी, yes, शुभी का क्वेश्चन है व्हाट इज नेशनल गारंटी एक्ट 2005 एंड व्हाट इट प्रोवाइड्स टू पीपल। यस सची बताओ। मैम ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऐसा होना चाहिए था। और ये दिस एक्ट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। दिस एक्ट वाज इशूड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर 100 फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर people who are unemployed for some days, and if government is unable to provide them employment, then they are paid, ऐसे ही पे कर देते अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट। Okay, can you justify Anjan's question also why Narega is called right to work, because it's the same thing? Ma'am, it is also called right to work because each and every person has the right to work, because if he or she will not work, it would he or she will be burden on our country. Okay, yes. Anmol का question है what is the main objective of private sector? Who wants to answer this? कार्तिक है तो थोड़ा थम जा बेटा, जिसने पहले प्रेजेंटेशन किया है पहले उसका हो जा, नहीं तो फिर आई गिव यू अ चांस। To earn profit. To earn profit. Is that the only reason? Yes, ma'am, to provide service and to earn profit. Yes, Tanya. In private sector, the individual is himself or herself is the owner of that business or what the work he or she is doing. So तो मतलब ऐसा होता है कि पब्लिक सेक्टर में जो आप जितना भी कमा रहे हो आपको उतना गवर्नमेंट आपको देती है और आपको एज अ टैक्स उस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अपने खुद के वर्कर्स रखते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कितनी सैलरी देना है और कितनी देना है। इस पे गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकती और इससे आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। और तो फिर जो लोग हैं उनकी भी आपको एश्योरिटी रहेगी कि हम इनको इतना पे कर रहे हैं तो ये हमें छोड़कर नहीं जाएंगे और हमारा लास्ट टाइम तक हमारा साथ देंगे। Okay. Yes, Saurabh, to answer to your question that all are equal and if you are able to justify, can we mention them equally important? No, you cannot do that because in the book it is explicitly written that tertiary sector is more important. No, they cannot make profit however they want. They are bound by rules and regulations and restrictions, but their main objective is profit making. But मुझे ऐसा लग रहा है कि अनमोल के क्वेश्चन का एक और डायमेंशन है that what is the objective of having a private sector? Can anybody answer this question? Absolutely correct. To increase the GDP, to basically provide a variety of services to people who can afford it. वही वाली बात है सीधे, मेरा फेवरेट एग्जांपल BSNL और जियो।
जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करें, उन्हें एक वैरायटी मिल रही है, दे आर गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, इफ दे कैन अफोर्ड दे कैन अफोर्ड इट. Yes, anybody else has anything else to say? Okay, add. In tertiary sector, more and more people get educated, and that's why they provide more technology and more assets to agriculture, means primary sector. If the people of primary sector start continuously using their primitive tools like family labor or what they are means, अगर वो अपना वेल्स वगैरह यूज कर इरिगेशन के लिए अपने फैमिली वर्कर्स को यूज करेंगे, लेकिन टर्शरी सेक्टर में जो लोग रहते हैं वो एजुकेटेड रहते हैं, जिस वजह से वो नई टेक्नोलॉजी को मतलब और डेवलप कर रहे हैं. इस वजह से फार्मर्स को इरिगेशन के लिए बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए ऑप्शंस मिल रहे हैं, उन लोग को HYV सीड्स मिल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो एग्रीकल्चर है उसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. I think, Saurabh, that Tanya answered your question quite well, but I'll just give you towards agricultural college. एक तो एग्रीकल्चरल कॉलेज, दे टीचिंग द न्यू एंड डिफरेंट एंड इम्प्रूव्ड टेक्निक्स. दूसरा, ये जो HYV सीड होते हैं ये साइंटिफिक लेबोरेटरीज में तैयार होते हैं. दैट कम्स फ्रॉम द थिंक टैंक. एंड यस, योर क्वेश्चन, इसका आंसर मैं सिमोन से चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी ये पूछना था. यस सिमोन, जो सौरभ ने क्वेश्चन पूछा है उसको क्लैरिफाई करो तुम. Simone? Can you hear me? Am I audible? Yes, clarify that. ये जो सौरभ का क्वेश्चन है, that it was mentioned in the PPT that activities in secondary and tertiary sector are organized, so are some small group shops that do not follow government rules are organized. बताओ. Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. थोड़ा अच्छे से क्लियर करो, यस और नो. मैम, जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो नहीं करते वो तो ऑर्गेनाइज्ड होंगे ही नहीं. तो फिर तुमने ये कैसे लिख दिया कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और प्राइमरी अनऑर्गेनाइज्ड होता है? मैम, उसमें मतलब वो था कि जो मतलब जो प्राइमरी सेक्टर था वो ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज करता था, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड था. But that is not how we classify organized and unorganized sector. They are classified on the basis of the organization of employment. कि employment के rules क्या हैं. So strike off that point. That point was invalid. It should not have been there when we are talking differences, because we cannot classify them on both bases. हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्राइमरी अनऑर्गेनाइज्ड है, सारे सेकेंडरी और टर्शियरी ऑर्गेनाइज्ड है. जो ट्रक चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, वो कोई ऑर्गेनाइज थोड़ी है. So that point should be stricken off. That was a wrong fact. And there is one, yes, it was basically wrong. I agree with you. पार्शियली और देखो, यू कैन नॉट से विच हम सेक्टर को पार्शियली या इम्पार्शियली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. हाउ कैन वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर कैन बी प्रोटेक्टेड? अंजन, इसका आंसर वैसे उसने पीपीटी में दे दिया था. आई वुड सजेस्ट यू टू लुक बैक इनटू द व्हेन दिस वीडियो इज रिलीज, एक बार देख लेना. Yes, Sunidhi asked that what is underemployment in agricultural sector? सुनिधि, पहले तो तुम ये बताओ अंडर, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं सुनिधि से बात करूं. सुनिधि, अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली क्या होता है? बेटा, I
can't hear you. You are in such a loud zone. I could hear your TV better than I could hear you. ऐसे क्लास लेते हो क्या तुम लोग? पीछे टीवी चलता रहता है तो मेरी आवाज कहाँ सुनते हो? बेटा अगली आ गई है, हो सकता है 15 अक्टूबर से तुम लोगों को स्कूल बुलाकर ही पढ़ाया जाए। किसी के अंडर काम करना? ओके, दैट इज वेरी न्यू टर्म फॉर मी। आई नो व्हाट अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स, बट आई वांट टू आस्क सुनिधि कि वो क्वेश्चन कहाँ से लेकर आई है, जब उसे पता ही नहीं है अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। I will not consider this a question. I know, I know. I need to ask. It's my job. Yes, anybody has anything else to say about this presentation? बेटा अब टाइम खत्म हो गया, हम लोग अगली क्लास में तुम लोगों के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है we'll need one more session for this. And I have one more question, which was the biggest blunder in this whole presentation. It was joint और cooperative sector कहाँ गए? जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर मेंशन ही नहीं किए गए। I don't know, beta. I don't know if it is. Yes, you have to do it in the next class. यहीं से continue होगा where we are leaving it today. I don't know about holiday. मैसेज आता है तो वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने कुछ नहीं पूछा है, थैंक्स अ लॉट। तुम लोग अपने खुद के नंबर कटवा रहे हो। यू आर मेकिंग इट ऑल इजी फॉर मी। यस, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी ले लेंगे सौरभ। Fine. So we're done with this. Thank you and Saira. Excuse me.